So, Bakir bhai, first of all, tell me, let's start with the origin, the real background. Where does your ancestry come from? Where do you originate from? Originally, my forefathers belonged to uh, Punjab, Eastern Punjab, from Jalandhar, and my forefather was Dhurpad Gavaiya. They were singers, and when my grandfather died, my great grandfather died. He was a singer. He's a classical singer, the Dhurpad style of singer. And my grandfather was that time uh, probably he will be 8 or 7 years old. And my grandfather told me when he left the world, uh, he was worrying about uh, because Dhurpad type of singing is going to dying. Hmm. How would be the future of classical music? But my grandfather and my grandfather uncles, they decide because my great grandfathers died and they decide to taught them instruments because he was very good trumpet player. ठीक है, अब हम उस मौजू पे आएंगे. We will come to that about how your family got into instruments. तो फिर लेकिन कुछ आपका basic biodata मैंने पहले लेना है. तो where did you grow up? मैं लाहौर में ठीक. पैदा हुआ. लाहौर में I grew up in the Lahore. Where did you go to school? In Lahore, Islamia High School. Okay. So apart from music, what did you enjoy in school? What subjects did you enjoy in school? My favorite subject is to knowing. I have a lot of curiosity about music, culture, history. I think this is my lifeline. Music, history, culture. Even मेरी जब थोड़ा मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ. बिल्कुल. जब मेरी अम्मी मुझे 1 रुपया देती थी स्कूल जाने के लिए, तो उस दौर में 1 रुपये में ये होता था कि यानी 50 पैसे का एक नान आ जाता था, 50 पैसे का सालन आ जाता था. तो मैं स्कूल जाता था तो मैं उस 50 पैसे रोटी नहीं खाता था. मैं कोई ना कोई बच्चों का रसाला खरीद लेता था 1 रुपये का. उसमें तो मुझे अक्सर अम्मी मुझे डांटती भी थी कि ये तुम क्या करते हो, कुछ खाते नहीं हो. मैं कहा अम्मी मैं क्या करूँ, वो बच्चों के नावल डाइजेस्ट होते थे उसके ऊपर, वो मुझे अच्छे लगते थे, मुझे फैसिनेट करते थे. तो वो मैं पढ़ता रहता. बस वो पढ़ने की आदत वो आज तक है और आज भी पढ़ता ही रहता हूँ. पढ़ना इस वजह से नहीं कि मुझे अपनी प्यास बुझानी है और उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना है. तो ये चल रहा है बस. So if there's any non-Urdu speakers, what Bakir Bhai was saying that is that as opposed to having a favorite subject when he was in school, he had a thirst for knowledge, particularly around music, history and culture. And as opposed to spending any pocket money he may have had on sweets or things, he would have spent it on whatever source of knowledge or information he could have got his hands on. And that yearning for knowledge and thirst for knowledge has always remained with him up until today, and I can certainly vouch for that. Okay, so moving on, Bakir Bhai, I would say since me and you have met, the most common topic of conversation, and maybe not the most common between me and you, लेकिन जिसके बारे में but I remember when लेकिन जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है? So the subject that you speak most about since we have met, in my eyes, has been your late father. Yes. Okay. He's the one that you talk about more than anyone else. Yes. So we all hope, I'm a parent as well, we all hope that we leave a strong impression on our children, कि हम अपने बच्चों पे, हमारी औलाद पे कुछ legacy, कुछ impact, कुछ values छोड़ के जाएं. What is the biggest impact of your late father on your life? I'm not a philosopher. I'm not a analyst. मैं कुछ भी नहीं हूँ. But this is my personal opinion. What I got from my father. Hunger of knowledge.
not a hungry about food, wealth, just hunger for knowledge and your character. Hmm. You should, your character neat and clean and transparent, and they should be, uh, because you are a correspondent of your parents, you have to represent your father teaching. That's why I always try to be a good person. This is the main impact which I get from my father. So what were the, obviously there's music that आपके वाले साहब ने आपको, and we will come on to that, कि आपकी म्यूजिक की टीचिंग कैसे शुरू हुई थी. लेकिन म्यूजिक के अलावा मेरे जो वालिद साहब थे, my father was a passionate cricketer, so we all had to play cricket, but then there were other things as well. There was some spirituality, there was music, there was education. So आपके वालिद साहब, your father, apart from music, what were the other key disciplines that he tried to give to you? मेरे जो वालिद, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मैं उनके लिए ये कहूँगा, उनकी ज़िंदगी में मौसीकी, और ये को मैं मजहबी बात नहीं करने लगा, दिस इज़ अ नोट ए, होगी ये मजहबी बात भी होगी, बट मैंने अपने वालिद से मौसीकी और करबला, ये दो चीज़ें मैंने सुनी हैं, और वो ज़िंदगी को करबला के तनाजुर में मुझे समझाते थे कि दो साइड है, एक है सब्र की साइड, एक है सब्र की साइड पे भूख भी है, प्यास भी है और गला भी कटवाते हैं, लेकिन बात हक की करनी है। और एक करबला की साइड है जहाँ पे आसानियां हैं, पानी है, खाना है, आसाइशें हैं, राहतें हैं, और कंट्रोल है, हुकूमत है, सब कुछ है। तो मैंने अपने वालिद से ये ज़िंदगी के दो पहलू ही देखे हैं, एक मौसीकी और एक करबला। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जो सुर और लय की डेफिनेशन अपने वालिद से सुनी है, आपको मालूम है कि मैंने क्या, तो वो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बात कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल खुल के भाई. मैंने अपने अब्बू से पूछा था कि अब्बू सुर और लय क्या है? So sur in English is Melody. melody, and la Note. La is a tempo. T. What is la and sur? What is a tempo and melody? तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि ये मेरी ज़ात से ऊंचा सवाल तुमने कर दिया, तो मैं इसका जवाब देने से कासिर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या जवाब है। हाँ, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपसे शेयर कर सकता हूँ कि सुर जो है ये मौला हुसैन की मजलूमियत की अक्कासी का नाम है, वाह. और लय ये मौला अली बादशाह की तलवार के गजब का नाम है। सुभान तो अल्लाह. लेकिन वो गजब जो है वो राह इंसानियत के लिए है, वो किसी ऐसे इंसान को लिए वो गजब है जो इंसानी माशरे के लिए नुकसानदेह है, उसके लिए वो लय गजब कर वो तलवार गजब रखती है, लेकिन आम याम में वो तलवार है ही नहीं है। So for the non-Urdu speakers, what I asked Bakr Bhai was that apart from music, what are the other key influences of his late father, who Bakr Bhai has always spoken most commonly about, has been his late father. And Bakr Bhai was saying that in addition to music, there were some key events in Muslim history. There was a very significant event that took place in the town called Karbala. And the lessons from that event were the most dominant teachings that were given to Bakr Bhai. Lessons around patience, humanity, tolerance, humility. That's what Bakr Bhai was saying, that combined with music were the two key things that were transmitted to him from his late father: music, but also character building through the events of Karbala, which is a monumental event in Islamic history. So okay, so let's go on from here to then music. So tell me how you discovered you were able to do something called magic on the Bansuri, or how did someone else discover that to then
say, fine, this child, this person is worthy of being taught? I was that time maybe 12-year-old, and I am in the house. I was doing homework for the school, and my uncle was a great flute player. His name was Ustad Ghulam Shabbir Khan, and he was very popular as a Shabbi Khan, Shabbi. And he was not, I'm not like uh, saying about him because he was my teacher, not. He was a great, really. Believe me, he was a scientist of flute. I am just dust of his feet. He was a great. He was making his flute, and I was homeworking in my old home that I. बाकर भाई बेशक My, उर्दू में करें बात, मैं फिर बाद में ट्रांसलेट भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं, जो भी तो आप वो आसानी समझे. मैं और लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो फिर वो ये हुआ कि वो फ्लूट बना रहे थे, तो मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया, तो मैंने उनका फ्लूट पकड़ के उसमें ब्लो किया. तो वो मुझे पूछे कि यार ये तुमने किया ब्लो? मैंने कहा जी. मैंने कहा शायद मेरे से कोई गलत हो गया. यार फिर करना, फिर करना, फिर करना. कोई 15-20 दफ़ा उन्होंने सुना इस तरह से. तो इतनी देर में मेरे दादा अबू आए और वो कहने लगे कि पंजाबी में कहने लगे कि अब्बा जी, जिस गल नूं 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ. Wow. तो वो पहला दिन था मैंने फ्लूट शुरू कर दी. So the question I asked Bakir Bhai was, how did your music education start, and how were you even recognized as someone that was worthy to be taught? And his uncle, his dad's younger brother, who was a great flute scientist, is what Bakir Bhai said. They was basically sitting in their family courtyard, and he was making a flute, and Bakir Bhai grabbed it without his permission and blew into it. And his uncle turns around and says, "Was that you?" And he said, "Yes." And then his uncle said, "Do it again, do it again, do it again." And he asked him to repeat this 15, 20 times, during which time Bakir Bhai's grandfather walks in, and Bakir Bhai's uncle, he says to his grandfather, the sound which takes years in a child to produce, years of learning, he's just done on his very first blow. And that's where he was, his learning began there and then. So explain to me how that education starts. Kaise shuru hota hai? I mean, what does it look like on a daily basis for a child? जब एक बच्चे को चुना जाता है कि अच्छा तुमको सिखाना है, तो उसके रियाज का क्या मतलब है? What does it look like? कैसे शुरू होता है? एक बहुत ज़रूरी बात मैं करना चाहूँगा आपसे. मैंने क्या करनी, दुनिया में सब बड़े लोगों की ये मैंने उनसे सीखी हैं, उन्हीं के ये उनके छोड़ी हुई बातें भी सदका होती हैं, वही मैं रिपीट करने जा रहा हूँ. हमेशा उस ज़मीन पे मेहनत की जानी चाहिए जिस ज़मीन में कुछ हो. जिस ज़मीन में सिर्फ पत्थर हो, वहाँ पे आप मेहनत करते भी रहेंगे तो मासूम पत्थर के कुछ नहीं निकलेगा. आपको पता होना चाहिए. पता चल जाता है जब आप खुदाई करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस ज़मीन में तांबा है, पीतल है, चांदी है, सोना है, तेल है, या ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है. इस ज़मीन की वो, इसमें साफ पानी है, मीठा पानी है, इसमें गदला पानी है, इसमें सीम वाला पानी है, तो पता चल जाता है. तो ये टीचर को पता. मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक ही सवाल किया, उसने कहा बोलो सा. मैंने कहा सा. फिर क्या? रे 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 गा 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 मा 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 पा दा दा नी नी सा सा नी नी दा दा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा दा दा नी नी सा. ये मेरे पहला लेसन था जिंदगी में. तो इस तरह से उनको यहाँ ही शुरू होती है
क्लासिकल मौसीकी में जब ट्रेनिंग शुरू होती है यहीं शुरू होती है? नहीं, ये इसका देखिए, क्लासिकी मौसीकी, वेस्टर्न मौसीकी, मगरबी, शुमाली, जनूबी, जितनी भी दुनिया की मौसीकी है, इनका सबका ताल्लुक जो है सुर सेंस से है, सुर सेंस से। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि ये पानी है, वो चाहे टेम्स का हो तो चाहे रावी का हो, है तो पानी है ना। तो ये कहना, हाँ फर्टिलिटी के अंदर फर्क हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो पानी है ना सारा। तो सबसे बुनियादी चीज है कि सुर सेंस है, यानी मेलोडी, नोट सेंस, नोट रिकग्नाइजेशन करने की सेंस है, टेम्पो को रिकग्नाइज करता है, और रिकग्नाइज करता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ रिकग्नाइजेशन कितनी है, उसकी कितना टाइम लेता है, जैसे फौरन। तो ये सारी चीजें हैं मौसीकी में। उसके बाद फिर सिखलाई शुरू होती है। तो मेरी खुशबख्ती के फिर सिखलाई मेरी अच्छी होगी कि अब्बा जी से, ग्रैंडफादर से क्लासिकल मौसीकी, और अबू से वेस्टर्न म्यूजिक, और चचा से फ्लूट। ये तीनों चीजें मुझे इकट्ठी सीखने को मिली, जो कि मैं बहुत लकी हूँ उस चीज में। एक टाइम पर? एक टाइम। यानी तो आप your so for those that are not Urdu speakers, perhaps people like Rebecca, I hope you're still online. What Barker Bhai was saying that in his formal education, which started at the age of 12, 13, that formal education was inclusive of Western and classical South Asian at the same time. And that was something quite unique for him, and has obviously defined him going forward in his musical profession. So, okay, then tell me this. You start training at the age of 12, 13. When do you first go on stage? When do you feel ready to go and actually perform? वो स्टूडियो में गया था, मेरे अबू और मेरे दादा और चचा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में थे। तो अक्सर मैं घर से खाना कोई लेके जाता था उनका स्टूडियो में। मैं बात कर रहा हूँ 1987 की। तो मुझे उस वक्त तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे फ्लूट प्ले करते हुए। मैं खाना देने गया तो वहाँ पे पोपा साहब वहाँ पे एज ए कंपोजर थे। उन्होंने पूछा, पोपा साहब बहुत बड़े गिटारिस्ट थे और ताफा बरादरान में से हैं। और मेरे वालिद से पूछा कि ये बच्चा आपका है? अब्बू ने कहा जी। क्या कर रहा है? अब्बू ने कहा पढ़ रहा है। क्या बजा रहा है? अब्बू ने कहा अभी फ्लूट शुरू किया है। तो उन्होंने कहा यार इसको बुलाओ। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा था। तो वो पहली दफा मैं गया हूँ। तो मुझे एक पीस साजिद हुसैन चक्कू साहब, और वो बहुत बड़े वो पियानिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक पीस याद करवाया, एक छोटा सा टुकड़ा बना के वो मैंने प्ले कर दिया। वहाँ पे तालियां मार दी लोगों ने, ये बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिर एम अरशद साहब थे, एम अरशद साहब के बेटे, उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा कि रात को आपने मेरे बैकग्राउंड पे आना। बस आज तब से 87 से आज तक इस तरह ग्रुप। हाँ। You said 1987. So 1987 is the end, towards the end of military dictatorship, right? In Pakistan. 1988 was the end of military dictatorship. So it wasn't just 10 years of military dictatorship, in terms of just... I am a witness of that era. Yeah, so it wasn't just a military dictatorship of governance, it was a military dictatorship even culturally, that there was a restriction or an elimination of arts and music and various other things in Pakistan. So what was it like as a musician at that time in Pakistan? मुझे उस वक्त इतनी ज्यादा होश तो नहीं है, मतलब होश है लेकिन इतनी गहरी एनालिसिस नहीं है मेरा। बट ये था कि फिल्म बन रही थी, फिल्म भी जो थी वो पंजाबी फिल्म्स थी, उसमें वही मार धाड़, और वो फिल्म मेरे पापा जो थे, मेरे वाले साहब, वो अफोनियम प्लेयर थे। मेरे दादा अबू स्लाइड ट्रम्बोन और ट्रम्बोन, मेरे दूसरे चचा ट्रम्पेट प्लेयर थे। तो पूरा एक सेक्शन होता था, ब्रास सेक्शन, और वो पूरे ब्रास सेक्शन को मेरे पापा, उसको मेरे वाले साहब नोटेशन करना, वो एक बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मुझे सीखने को बहुत मिला वहाँ पे। अब वो एक सुर को क्लिफ्स के हिसाब से लिखते थे, ट्यूबा का और क्लिफ है,
अफोनियम का और है, ट्रम्पेट का और है, ट्रम्बोन का और है, कार्नेट का और है, और पियानो का और है। वो वहाँ पियानो का पढ़ते थे और उसको कन्वर्ट करते थे मुख्तलिफ क्लिप्स के अंदर। तो वो सारा सिलसिला मैं देखता था, तो मैं अब्बू से कहता था आपको, आपका दिमाग तो फट जाएगा। वो कहते यार असूली तौर पे तो फट जाना चाहिए, लेकिन मुझे खुद लुत्फ आता है। मैं इल्म की गहराइयों में जब दाखिल होता हूँ तो Hmm. मुझे बहुत लुत्फ आता है। Hmm. तो ये उन्हीं की ये जो मेहनतें हैं ये मेरे हिस्से में आ गई। बाप की विरासत जो है वो दौलत भी होती है, और बाप का जो असल में मैं विरासत समझता हूँ वो बाप की वो थॉट, वो इल्म, वो आप पे ट्रांसफर हो जाए कि जो बाप चाहता है कि ये मेरी चीजें, मेरी औलाद। ये इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक की देन है। बंदा बस शुक्र, सबर और दुआ से काम करे। So, Bakr Bhai, let's talk about the Bansuri now. Okay. Um, did you choose the Bansuri or did it choose you? पता नहीं। एक चीज जरूर है, अगर इश्क नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अगर माँ खाना बना रही है और वो बच्चों के लिए, माँ के हाथ का खाना क्यों आपको अच्छा लगता है? आप क्यों कहते हैं जब भी आप कोई खाना खाते हैं आप कहते हैं यार माँ की याद आ गई? वो क्या मतलब उस खाने में कोई हीरे जवाहरात पड़े होते हैं? नहीं, वो माँ ने इश्क से बनाया होता है औलाद के लिए। तो वो तभी तक, वो आपको मरते दम तक वो खाने की लज्जत याद रहती है। इसी तरीके से अगर बताने वाला इश्क से बताए और सीखने वाला भी इश्क से सीखे Mm, तो mm, फिर mm. खाना बहुत हसीन पकता है भाईजान, उसकी महक फिर बहुत हसीन होती है। I asked Bakr Bhai, did the Bansuri choose you or did you choose it? And he says, I don't know. What I can tell you is that if both parties are coming together from a position of love, the teacher and the student, then something special can happen. So then taking that further, Bakr Bhai, there are many breath instruments in the world, okay? And a lot of them I listen to all the time, because I'm a jazz listener. I'm not even a jazz listener. I believe people are jazz people or not jazz people. I'm a jazz man, right? What is it though about the Bansuri that makes it almost hypnotic? There is something about this instrument. There is is it a frequency that it reaches? Is it the material? Is it the wood? I know it ultimately comes down to the person who's blowing into it, but there is something about the bamboo flute that other instruments don't get to that level, in my opinion. And not just because of what you've done in jazz, and we'll talk about that as well, but even in pure Hindustani classical bansuri, there is something about the bansuri that the Western flute I don't think can achieve. What is the history of this instrument? The first thing about this instrument, this is one of the ancient instrument in the world. The first thing, this one. And second one, you can find this sound in different name in every civilization. Even Aborigines, even Far East, even Africa, even Europe, even North Siberia and Eskimos, and Latin America and America as well. You can easily find this sound in with the different names. And third thing is that every breath instrument is a wind instrument. There are only uh, two situations to play. Two, which one of you have to put your lips in the mouthpiece like a brass, like a brass. Yeah, so like with a trumpet, trombone, Or brass saxophone, again. your mouth goes over the top, right? And you can put the mouthpiece in your mouth, Yeah. like a saxophone, shehnai, bassoon, oboe, and only the flute is only one instrument in the world which mouth placement is very unusual, because the mouthpiece is also outside and your lips also outside. You can't put your mouth in the mouthpiece. Correct. And you can't put the mouthpiece in your mouth like this.
Correct. And this is a basic difference. And third one is it's very closer to the vocal, because vocal has, I think it's a lyricless vocal. Flute, if you ask me to define the flute, I would say this is a lyricless vocal. It's very near to vocal. Yeah, because of the dependency on the human breath. There is no, you're not putting your mouth over it. There is a dependency on the human breath here to actually transmit the sound. Yes. Because you can't lock your mouth when you play saxophone. You can lock the mouthpiece and outside connection will not disturb you. I'm with you. If there is a wind, a lot of windy atmosphere, you can't play the flute because the mouthpiece is there, the wind will cross. लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि बांसुरी क्यों वो इंसान को, इतना दरवेश क्यों ये इंस्ट्रूमेंट है? I mean, इसमें एक hypnotism है. ये असल में it depends on yourself. When I play a very happy flute and a very happening flute, when I feel I'm a very happy person. When I feel something sad, when I feel I play sad something, it's a life. Flute is a life. Every element of life you can find in every instrument you can find, but flute is very near and a very closer and a very easiest way to express yourself. I hear you. For those that are tuned in, feel free to throw in any questions. I'll definitely get them asked to Bakr Bhai. Okay, so how much time we got left? We've got about 10-15 minutes. We'll carry on. So, okay, fine. Next question is this then. Bakr Bhai, we both connected through jazz. Okay, now, in my opinion, and I'm willing to stand corrected, no one has done what you have done with the Bansuri before, which is to take it from, the subcontinent directly into, the world's biggest jazz stages, and naturally fit it in there. So the question I have to ask you is it something about the Bansuri which was waiting to be explored, that you could take the Bansuri into jazz very easily? Or is this something about your ability to take the Bansuri into jazz? मैं इसका जवाब ये दूंगा, आपके ज़हन में तहरीर हो ना, तो आप पेन से भी लिख लेते हैं, उंगली से मट्टी पे भी लिख लेते हैं, दीवार पे भी लिख लेते हैं. अगर आपके ज़हन में थॉट है तो आपने उसको सिर्फ कन्वर्ट ही करना है ना. तो कन्वर्ट असल में एबिलिटी होती है आपके ब्रेन में. हाथ तो स्लेव है आपका, जैसे कंप्यूटर में होता है कि सीपीयू में सारा कुछ है, हाथ तो एक माउस का काम कर रहे हैं. ये माउस है, मेमोरी और प्रोसेसर तो इधर है सारा, जो वहां से यहाँ तक आ रहा है. और ये बड़ी खूबसूरत बात है. असल में मौसीकी आपके अंदर होती है, वो आप जो आपके अंदर होती है, वो आप कुछ एक मौसीकी जो सिर्फ उंगलियों से बजती है, उसमें भी दिमाग होता है, लेकिन उसमें उंगलियां ज्यादा काम कर. एक मौसीकी जो सिर्फ दिमाग से और फिर उंगलियां और दिमाग जब सिंक हो जाता है तो फिर बहुत खूबसूरती आती है, रोशनी आती है, महक आती है उसमें. तो मौसीकी बुनियादी तौर पे ये आपके इल्म में क्या है, मादरत चाहता हूँ, आपके इल्म में क्या है, आपका जाती लगाव क्या है, आपकी अपनी रूह क्या है. मैं जैज सुनता हूँ, मैं जैज में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ. मैं क्लासिकल सुनता हूँ, मैं उसमें अपने आप को फ्यूज कर लेता हूँ. मैं अगर पर्शियन, अरेबिक, अगर फार ईस्ट, मैं जो भी कल्चर मैंने सुने हुए हैं और मैंने परखे हैं और फिर मैंने उसको उन पर थोड़ी रियाजत करके उसको थोड़ा रिफाइन किया है, वो मैं महसूस करता हूँ, तो फिर मैं उसमें ढल जाता हूँ. तो पानी की तरह रहने की कोशिश करता हूँ. पानी का जैसे कोई रंग नहीं होता, ये इसको किसी भी रंग में मिला दो, ये जैसा हो जाता है.
تو موسیقی میں بھی آپ کو ایک پانی کی رنگت میں ہونا چاہیے، اور تاکہ آپ ڈھل سکیں ہر چیز میں. لاک نہ لگا لیں بڑا والا، کھلا ذہن رکھیں، ہر وقت سیکھنے کی جستجو میں رہیں. یہ نہ سوچیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے. نہیں، سب ٹھیک ہے، اپنے اپنے حساب میں سب ٹھیک ہے، بس آپ نے اس کو اپنے انداز میں لانا. Bakir Bhai, I agree with everything you say. There is, to take what you've done, take the Bansuri into jazz and the world's biggest jazz stages. Me and you have been together to New York 3 times to see you perform at the Lincoln Center. Yeah, I get all that. But there is something unique about jazz, in my opinion. And I can't even read a music sheet, but I believe that jazz is that one form of music that only comes from here. I don't believe jazz comes from a music sheet. You have to be a jazz person and express yourself. Now, ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا. 2 پرسنالٹی ایسی ہیں جو میں جن کا ذکر بہت، بڑوں کی تو میں بات نہیں کرتا، استاد بڑے فتح علی خان صاحب، استاد علی بخش خان صاحب، استاد عاشق علی خان، استاد توکل حسین خان، استاد سلامت علی خان، استاد بڑے غلام علی خان صاحب، استاد غلام حسین شگن صاحب، یہ جو بڑے استاد امیر خان اندور والے، اور دوسرے جن کے میں نام بھول گیا ان سے معافی کے ساتھ ساتھ کے ساتھ. ان لوگوں کو میں سن کے مجھے نا ایک جن کی ریکارڈنگ میسر ہے ان کو سن کے میں بہت سیکھنے کی کوشش کی بہت. اور 2 شخصیات جن کا میں ذکر کروں گا کہ میں اپلائی کیسے کر رہا میوزک کو. ایک اپنے والد صاحب کہ Linda, he will be playing very shortly. I'm going to take a break in a minute and get him to play something. ذکر کرنا چاہوں گا. ایک میرے والد، وہ مجھے اکثر نا کوئی بھی راگ یا کوئی بھی انداز گنگنایا کرتے تھے تو مجھے بہت مزہ آتا تھا. جیسے میں ایک چیز گنگناتا ہوں، اب وہ اکثر گاتے تھے یہ ایسے اپنے موڈ میں آ کے مجھے کہتے یار یہ سنو یہ نوٹ. یہ میرے دادا ابو نے کوئی پاکستانی فلم تھی حیدر علی، بہت پرانی فلم، اس میں یہ بجایا ہوا تھا. تو میرے ابو کہتے تھے یار یہ نوٹ سنو. میں سناتا ہوں آپ کو، میں فلوٹ پہ بھی سناؤں گا، ابھی گلے سے سنا رہا ہوں. یہ پٹ دیپ راگ ہے اور انگلش میں یہ میلڈک مائنر اس کو شاید بولتے ہیں، میلڈک مائنر بولتے ہیں. ہاں جی. ساگا پاسا لا را 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 یہ ابو کا ایک خاص انگ تھا. یہ تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ میرے دل کو چھوتا ہے. اور دوسری شخصیت میرے ماموں، نام رزاق علی، اور ان کو سارے جاکی خان صاحب کہتے تھے. بلیو می، یہ میں ماموں کر کے نہیں بات کر رہا، بہت سریلے آدمی تھے، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اس طرح سے ان کا ایک پنجابی، ایک ان کی ایک ڈیلیکیسی تھی، ان کی ایک پنجابی انگ تھا ان میں، پنجاب کا خاص طور پہ. لیکن وہ سروں کی جو سلیکشن اور سرچ کرتے تھے نا سر کو، وہ دل ادھر لگتا تھا. So, are you saying that, because I'm fascinated by your ability to do the magic you do in jazz,
In the words of Wynton Marsalis, one of the finest musicians in the world today, in my opinion, the godfather of jazz, he calls you one of the finest musicians in the world. And that is ये because of उसका the, बड़ा the way you express yourself through jazz. Are you saying that your late father, Mamu, etc., they put into your ruh these jazz chords and sounds as a child? नो मैं उस वक्त अबू के साथ तो ये था कि मैं 12-13 साल का था, लेकिन मामू के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ जब मैं 25-26 साल का हुआ। Right. Okay. हाँ, वो बहुत सुरीले आदमी थे, मैं आपको बता नहीं सकता। उनका नाम रज़ाक अली जाकी खान साहब उनको कहते थे। क्लारनेट प्लेयर थे वो। Clarinet. Okay. हाँ। All right, I'm going to do a quick fire session with Bakr Bhai in a minute. So Bakr Bhai, I'm going to ask you some very quick questions and you're going to just give me your immediate answers. But before we do that, Linda's asking for you to play something. I'm sure other people are as well. So Bakr Bhai, 3-4 minutes, whatever you feel like playing, please, why don't you grab the bansuri and give us some of your magic. मैं फिर आपको कोई चीज, यही जो मैंने अभी गाया, तो मैं ये अपने वालिद, अपने दादा अबू उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, अपने चचा गुलाम शब्बीर खान, अपने मामू जाकी खान साहब और मेरे एक ताया, उनको शब्बर अली उनका नाम था और उनको शब्बर कहते थे सारे। वो भी बहुत सुरीले आदमी थे। सुभान अल्लाह। मैं अपने इन सारों का जिक्र मैंने कभी नहीं किया, आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने इन मोहसिनों का जिक्र करूं, और मैं दूसरे जो बड़े लोग हैं उन सब का बड़ी इज्जत के साथ और एहतराम के साथ, जिनका नाम मैं भूल गया, मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड लोगों के नाम बता रहा हूँ। बाकी तो मैं राह चलते हुए भी किसी से कोई अच्छी लाइन मुझे आ जाए तो उसको भी अपना उस्ताद समझता हूँ, उससे भी कुछ ना कुछ सीखा ही होता है। ये कुछ हस्तियां जिनका जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता था। तो मैं So to the non-Urdu speakers, Bakr Bhai was talking about a lot of his direct and immediate and distant family relatives who have, of whom have passed away, but have all had a huge influence on him musically, and who themselves were phenomenal musicians. The likes in front of which Bakr Bhai says that he himself is, he's not even comparable to them as musicians. So he was talking about a lot of them, and Bakr Bhai was saying that today he feels that he wants to talk about some of those people in his family history and lineage who perhaps he's not spoken about before. And I guess in honor of them, Bakr Bhai is going to share with us some magic on his bansuri for a few minutes. वही मैं बजाने लगा हूँ। हमारे पास टाइम कितना है? We have time, but Bakr Bhai, maybe don't be directly on the mic. आप सब लोगों की इजाजत से, with the permission. You're asking us. हमसे इजाजत मांग रहे हैं. We can keep talking, and please, if anyone's got questions, fire them in. Me and Bakr Bhai talk all day long anyway. Today we just happen to do it on Facebook. Bakr Bhai, turn the volume down on the tanpura.
Okay. Bakir Bhai, I'm going to ask you some quick questions as we wrap up. Quick questions and give me your immediate answer. Okay? जी जी इसमें आपने सोचना नहीं है. You are not to think about these answers. Say it. जी जी Which musician have you been most inspired by? इन क्लासिकल ईस्टर्न क्लासिकल और वेस्टर्न Any. और जैज Which musician, number one, you've been most inspired by? माय पर्सनल ओपिनियन इन फ्लूट आई इंस्पायर्ड बाय टू पर्सनालिटी Bakir Bhai, could you repeat that? Because for me, at least, it was broken. So, in flute, who were you most inspired by? In flute, I'm inspired by my teacher, my uncle, Ustad Ghulam Shabir Khan Sahab, and Pannalal Ghosh. I'm really admire them. They are like a teacher for me. Pannalal Ghosh and Hari Prasad Chaurasia Sahab. In Western classical music, I always admire Galway and James Galway, flute player. They are great. And in a jazz music, I Marcellus and Okay, so next question. Who's your favorite artist in Pakistan, dead or alive? ये बड़ा मुश्किल सवाल है No, भाईजान. no, I know. So instinctively, straight. Give me a straight answer. नहीं तो वो बड़े बताना पड़ेगा किस type of music में. Okay, in Mehdi Hasan. Mehdi. Okay. Mehdi Hasan. Mehdi Hasan. He's the favorite. Okay. Yes. What do you prefer playing? Classical, jazz, or commercial, more general music? It depends on my mood. Personally, I feel जो subcontinent classical music and jazz. Okay. What is your favorite rag? It depends on time and mood. I know, but I'm asking you, what is your favorite one? My favorite one. ये बड़ा मुश्किल सवाल आपको पूछो आपको खाने में क्या तो ये मैं क्या बता सकता हूँ. सारे अच्छे लगते हैं, बस जो मुझे आता तो कुछ भी नहीं है. जो थोड़े बहुत राग का मुझे वादी समवादी थोड़ा बहुत पता है तो वो बस जो अच्छा जिसमें कोई अल्लाह मेहनत बरकत डाल दे वो बस वही अच्छा लगता है. What's your favorite food? आजकल तो मैंने वो फूड बहुत लेकिन मेरा फूड ही में बहुत जबरदस्त लेकिन आजकल बिल्कुल सारा कुछ छोड़ा हुआ है. आप तो मालूम है आपको. Correct. मेरा फेवरेट फूड जो है वो ये है कि बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का महका हुआ जिसमें यानी जिसमें कोई जिंदगी की महक आ रही हो वो वाला खाना हो और वो कीमा बना हो और कीमा पल्लों का ना हो वो रान का गोश्त हो. I mean, in terms of today as a musician in Pakistan, how do you feel about the state of music today in Pakistan? How do you feel as a musician? Do you feel, I know there's corona ko zara apni jagah pe rakhe, but do you feel that things are progressive in the music scene? Do you still feel that there's a challenge for a musician in Pakistan? इसका जवाब अगर मैं हकीकत में देखूं तो मौसीकी में रहते हुए और मौसीकी में भी अगर आप वोकलिस्ट नहीं और वो भी मेन स्ट्रीम वोकलिस्ट नहीं है पाकिस्तान में तो मौसीकी से सरवाइव करना हमेशा पाकिस्तान में चैलेंज है. इवन इंडिया में थोड़ा कम है लेकिन पाकिस्तान में अगर आप वोकलिस्ट नहीं है और वो भी पॉपुलर वोकलिस्ट नहीं है तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है. मैं बहुत शुक्र भी अदा करूं तो वो काम होगा. शुक्र है मेरे खुदा की जात का. बड़ा अच्छा इज्जत आबरू और बड़ी डिग्निटी के साथ काम करता हूं और जो मेरे पास मैं बहुत शुक्र को अदा करता हूं. जो नहीं है मेरे पास उसकी मैं दौड़ में शामिल नहीं होता. जो मेरे पास है उसका मैं बहुत शुक्र अदा करने की कोशिश करता हूं.
So I asked Bakir Bhai for the non-Urdu speakers, you know, what is the state of affairs for a musician in Pakistan today? Is it a progressive space? Is it, you know, is there a career? Is it a comfortable space for musicians? And like I'm sure for all musicians all over the world, being a musician is a challenging profession. But in particular, what Bakir Bhai was saying is that in Pakistan, if you're not a vocalist, and a mainstream vocalist first and foremost, then it's very difficult for musicians. Um, and that is something I've noticed as well, that the music that comes out of Pakistan, the, the musicians are never credited, the musicians are never referenced. Few and far between. कभी गलती से किसी musician को credit करते हैं, लेकिन आमतौर पर as a general rule it's always about the vocalist. Whereas in the West, here in the West, you can be a violinist and be world famous, you can be a pianist and be world famous, so it's a different culture. Having said that, Bakir Bhai was saying, despite the challenges, he's very grateful for everything he's had and got, and he's been able to pursue a career with dignity and with respect, and long may that continue. So for me, this is the first in a series of doing some, you know, very informal but deeper personal sessions that enable people like Bakir to, you know, be seen for who they are. And there is a lot more to Bakir than just an amazing Bansuri player. And we have worked together so hand in hand for the last several years, really creating, you know, a platform for Bakir Bhai outside of Pakistan. And, you know, that's doing very well. You know, our YouTube channel is doing very, very well with a lot of great, you know, numbers there on streams, etc. So, but Bakir Bhai, what would you like to sum up with? What are your hopes and aspirations for the future? आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपकी दुआएं क्या हैं आने वाले दौर के लिए? सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह पाक ये कोरोना को जाए। तो मेरी दुआ ये है कि सबसे पहले हम इस मर्ज से हमें खुदा ताला की ज़ात हमें निजात दे, हम वापस ज़िंदगी में वही गहमा गहमी आए। तो ज़िंदगी रहेगी तो प्लान भी बनते रहेंगे, ज़िंदगी सबसे अहम। चलें Bakir Bhai, thank you so much for joining us, for being the first Qalandar Arts personal session. It's given, you know, as I said at the beginning, well, I don't think I did say that if I had never have met you, I would never have set up Qalandar Arts. Being exposed to you, being close to you from 2014 for a year and a half before I set up Qalandar Arts, getting to know you, being inspired by you, realizing the power of music in a way that I didn't appreciate before. You know, if I never had that exposure to you, this project would never have happened. And I know that to be true. I'm not just saying it. So, Bakir Bhai, it made entire sense that the first session to be with you. You know, you're the founding father of Qalandar Arts. So we will do this again soon, and I'll be arranging other sessions as well with other musicians and artists from around the world in the coming weeks, and we'll keep this a regular thing. I hope you enjoyed that. It was my first ever time interviewing anyone. I hope it was of a reasonable standard at least, and we will do this again soon, Bakir Bhai.